अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। तो क्या हाल है? तो आज हम आ चुके हैं और इट्स 3:32 AM इन द मॉर्निंग। मैं रात नहीं भूल सकता इसको। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज इट इज़ लाइक आवर फाइनल अटेम्प्ट और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही ख़तरनाक तरीका है, उसको अप्लाई करेंगे। लाइक बिल्कुल जड़ से ही सब कुछ उखाड़ना पड़ेगा। बट ये अटैम्प्ट जो है कल हमने जब किया था, सो आई गेस कर्नल अपडेट हो गया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू इंस्टॉल उबुंटू। लाइक हमने इंस्टॉल कर दिया था बट रजिस्टर उबुंटू एक्चुअली। सो आई विल कम हियर एंड यहाँ पर मैं एक ये पूरा सेट ऑफ कमांड्स है, लेकिन आपको चैट जीपीटी पे कभी भी ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना चाहिए। इट विल जस्ट ब्लो अप योर कंप्यूटर एंड ठीक है। यहाँ पे जो है अब मैं उबुंटू को रजिस्टर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो है उबुंटू के दो वर्जन्स हैं, बट आई एम गोइंग टू जस्ट रजिस्टर दिस वन करंटली, जो मेरे पास पता नहीं कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। आई विल लेट्स सी, यहाँ पे मैं उबुंटू लिखता हूँ एंड आई हैव 2.0.6 है एंड मेरे पास 5 है, सो 22.04.5। ओके, एंड मेरे पास यहाँ पे 1 भी है एक्चुअली में। ओके, आई गेस आई विल गो विद 5.1। एक्चुअली कल जो हमने ये वाला इंस्टॉल किया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, एक सेकेंड। ओके, लेट्स कम हियर टू द पावर शेल। यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर को लेता हूँ इसको। लेट्स रन दिस एंड यहाँ पे मैं ये रन करता हूँ ubuntu। okay, let's just run. There's no distribution with the supported name. Okay, ubuntu, let's just, there's no distribution with this such name. Okay, हमें जो है इसका नाम पूरा लिखना पड़ेगा। 2 पॉइंट, ओके मेरी मेमोरी इतनी छोटी है, एक सेकेंड। इसमें क्या ज़ीरोज़ वगैरह थे? ubuntu, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है 24.5। हाउ टू जस्ट इंस्टॉल दिस? क्या मैं चैट सही पढ़ रहा हूँ अभी? पावर शेल में इफ यू वांट आई कैन गिव यू, नो 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 वेट। ओके, एक सेकेंड, हमने एक और चीज़ अभी तक चेक नहीं की एंड दैट इज़ इफ वी हैव द विंडोज़ फीचर्स टर्न ऑन एंड अगर वो ऑफ हुए तो फिर हमारे लिए इशू होगा। आई गेस कि वो ऑफ नहीं होने चाहिए, दैट वोंट बी प्रॉब्लम फॉर अस देन। ओके, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म्स, और उससे ऊपर हमारा प्यारा सा होना चाहिए विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ओके, ये भी हमारे पास इनेबल्ड है, दैट्स गुड। और अब जो है लेट्स कम हियर, पावर शेल में हम लोग आते हैं, run this as admin, let's run downloading ubuntu। वेल हमारे पास ubuntu ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई डोंट थिंक सो वी नीड ubuntu। WSL dash 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 t ubuntu is no। okay, लेट्स सी, वेल आई हैव एन डिस्ट्रीब्यूशन। हमें बस उसको ओपन करना था, तो मैं थोड़ा सा भूल गया था। यहाँ पे कल जो हमने है ये वाला इंस्टॉल किया था। लेट्स सी, प्रेस एनी की। ओके, इसने काम नहीं किया और जो खदशा था वो थोड़ा सा ज़ाहिर होता हुआ दिख रहा है। ओके, इसमें भी एरर आ गया। देन आई एम गोइंग विद
one version. Okay. WSL register distribution fill with this error. Okay. तो ये वाला एरर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी. force subsystem. Okay. If you still face the same error, WSL configuration को reset कर देते हैं. Okay. Let's see. WSL को उड़ा देते हैं. ठीक है, इसको मिल नहीं रहा because it does not exist. सही है. WSL की फाइल वैसे हमारे पास कहाँ मौजूद होगी? WSL, where is it located actually? WSL, try and install it. I guess yes. Okay, let's see. Okay, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है. We installed updates and install a program. इसमें programs हैं and वैसे ये रहा एक. ओके, हमने वो उड़ा दिया है. और दूसरा हम लोग जो है थोड़ा सा, अब अगर मैं ट्राई करूँ, इस पीसी में आता हूँ. और इस पीसी में अगर हम प्रोग्राम फाइल्स में आए और यहाँ पर अगर मैं WSL देखूँ कहीं पे, कहाँ लोकेट हो सकता है वो? लेट्स सी. यहाँ पे अगर मैं देखूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. ओके. लोकल ऐप डेटा, लोकल ये रहा. एंड में हमारे पास है WSL ये रहा. तो ये WSL की हमारे पास फाइल है एंड इसको पूरा उड़ा देता हूँ मैं. आई होप कि मेरा डिसीजन सही है. ओके, यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ. कह रहा है कि WSL कहीं पे तो खुला हुआ है. लेट्स सी. हमारे पास LM स्टूडियो में भी नहीं खुला हुआ. इसको बंद करते हैं. लेट्स ट्राई अगेन. लेट्स ट्राई. ओके, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाते हैं. यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन हुआ. ओके, एक चीज़ जो मैं भूल गया. WSL तो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, पावर शेल जो है. इसको राइट क्लिक करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं इसको. एंड यहाँ पे WSL / शट डाउन. ओके, अब जो है हम लोग शट डाउन तो हमने कर लिया है. नाउ ट्राई अगेन. ओके, यहाँ पे जो कमांड है वो देखते हैं. रिमूव आइटम /shippers. ओके, यहाँ पे देखते हैं.
यहाँ पे इसका पाथ अगर कॉपी हो सकता है, ओके मैं बहुत बड़ा पॉइंट मारने वाला था लेकिन शुक्र है बच गया मैं। ओके ओके सो विंडोज सबसिस्टम ऐप डेटा के अंदर लेट्स नॉट टच दिस फाइल अगेन ओके ओके तो हम यहाँ पे आ गए हैं then after that I'll have to go to app data subsystem hmm.
Mm,
ये वाला तरीका ट्राई करते हैं एंड ये अपना उबुंटू इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर इससे नहीं हुआ देन वी विल ट्राई टू go another way and then we will run some scripts to probably remove the existing damaged code. तो इसका अपना उबुंटू इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं and probably this is becoming quite boring but हम कर भी लगा सकते हैं. We have to just cover this up, you know. uh, we have to actually finish this and it is kind of a problem to solve. It is challenging but at the end of the day it is a problem that should be solved. Okay, so the recent stream has been quite boring, but I understand. We can study about connecting Gemini CLI to the GitHub actually. There is another simple way, and we should try that actually. It is without any much setup. Okay, we have done till this part. Okay, so we're going to do this. Let's come here. I guess we already have this. MD and Gemini. Let's run and see if it works for us here. We will say side by side connect this. So the Linux is installing and our Gemini is taking a start. Okay, it is taking quite long. Well, the process is running up here as I can see, and we are also running an installation of the Linux. So both are running side by side. Maybe the internet connection is not quite stable. Let's confirm from here. Well, it is because I'm streaming along. So there are three main internet heavy applications running currently. Downloading and starting the Gemini CLI. Along with that, basically running the command. Okay, so here we go. Here is our Gemini CLI, and let's see, connecting to MCP servers. We have 3 MCP servers connected. Okay, let me see what kind of MCP server did we connect last time. Slash MCP slash
and list the MCP server and tools. Let's see, using 3 MCP servers, but I don't know which one we are using. List the configured MCP servers and tool with description. Okay. List the configured MCP servers. So yeah, I'm telling it to list it. Okay, it got listed actually. So the GitHub one is disconnected. Apart from that, we have the stack auth MCP server connected, and it is globally connected. So this is quite concerning. Why is stack auth actually using our its MCP server globally? Because I have only used this in an XCS project recently. And here we have the shared scene one. Not a concerning part, but this one is actually, I'll try to just eliminate this one. And apart from that, we have the GitHub's disconnected MCP server. Let me just open up this file. Let's open it up with an IDE. Okay, downloading Ubuntu, installing Ubuntu, the virtual machine container document is invalid. And error code WSL install distro services, distro create VM HCS is invalid JSON. Okay, so let me just feed this problem here online to chat GPT. It will take care of this problem for us, and we can take care of the MCP service problem while it is happening still. Okay, so here we are. I'm not going to open the .env actually. We don't want our secrets to be revealed, but we quite to have this one here. And let me just come online here, and here's the headers part, but we do not need that. Actually, I will copy this and command docker. Okay, so there are quite some differences in this setup. MCP servers, GitHub command. Okay, so I will copy it from here. Like this. And here we go. And over to Shift and F. And let's just save this. Okay. So we actually got GitHub personal access token. Let's control C everything. GitHub personal access token. Okay, that's not a problem because the env is quite the same. And as we can see, we have that env here. So यहाँ पे हमारे पास जो है
सिंपल पढ़ना है, इतना कुछ इसमें मुश्किल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ एंड ये बेसिकली start a new session by writing Gemini, and I am very hopeful that this server will now connect to our GitHub actually. So let me just check if this token is still valid, personal access token in my GitHub right now. Let me navigate there और यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल पे आ जाता हूँ. Let me click on my profile. And here's the settings. I should see a personal access token here. Here it is. Fine grain token. Let me see if I can just okay. So I will hide my screen for now, as it was recording this. Okay. Okay. So my token has expired actually because I set it up the time for a very short interval. Let me show you. As you can see, my token has expired. So I'll be creating a new token here and deleting the existing one. This is quite simple, and let's get into it. Okay, I'm going to authenticate using my email. It's quite primitive. Okay, so I have successfully regenerated the token, and I have copied it. Let me come to Tray AI and paste the token here. Okay, अब टोकन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है. GitHub personal access token, GitHub personal access token. ठीक है ठीक है ठीक है, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान लगने लग गई है अब. और अब जो है हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे error during discovery server GitHub field for GitHub MCP. Okay, we will try that again using Control C, CLS, and then we'll write Gemini again. So अब अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन अपनी शो करूँ, तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास जेमिनाई की स्क्रीन दिख रही है. ओके, तो अब जो है मैं यहाँ पे ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ गिटहब कनेक्शन फेल्ड फॉर गिटहब एमसीपी connection closed. Okay, /mcp list. Okay, GitHub is still disconnected, but it is not a problem at all.
we have, okay, I just revealed my token. Not completely, but yeah, still did reveal the token. These are fine-grained repository scope tokens suitable for personal API in GitHub. Okay, let's just generate a new one. I'll generate a new one. Wait, GitHub personal access token. I named it GitHub personal access token actually. So let me just regenerate it. And it will expire on this date. So regenerate this token. I'm using Gemini CLI. Okay, let me copy this and let me see if there's any other way. Firebase Studio. Okay, it has also expired, but it is not a problem at all. I'll now just come here and hide this. Okay, we have our fine-grained token, and now we can hopefully try to connect GitHub. Thus, this was quite disappointing. Let's see what solution ChatGPT suggested on this one. ओके यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का भी आ रहा है हमारे पास जब ऐसे लेकिन
तो यहाँ पे after running this environment should be available to the rules or add export command with .env from define .env specifically. Okay, ये करना पड़ेगा. So I didn't notice कि हम export भी डाल सकते हैं. Without manually sourcing the file and the export command shows profile. Okay, so हम यही करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं वेट. Okay, let's just try now. Oh, it's 4:18 a.m. We are down the rabbit hole. Okay, I guess error server GitHub connection failed for GitHub. Okay, ये वाला एरर वैसे अभी तक नहीं आ रहा था, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको रिकवर करता हूँ पुराने कोड को. तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, बिकॉज मेरा पुराना कोड जो था उसमें कोई मसला नहीं था, एंड हाँ वो मैं रिवील कर सकता हूँ एक्चुअली. लेट मी शो यू गाइस. इसमें कोई मसला नहीं है. ऑथराइजेशन हेडर्स ऑथराइजेशन में हमारे पास ये आ गया है. ओके, अब अगर मैं ट्राई करूँ, अब तो हमने .env भी एक्सपोर्ट कर दिया है. होपफुली ये कनेक्ट हो जाए. अगर नहीं हुआ देन वी विल जस्ट ट्राई कि हमारा कोड जो है वो गलत ना हो. Connection failed. Okay, let's see. Let me ask you this, okay? Okay, so indicates that the Docker container for the GitHub MCP server is starting, but then immediately terminating before a connection can be established. This is often point to an issue with the server's execution or its required environment variables not being passed correctly. So here's how to troubleshoot this issue. Setting the JSON. Verify that is in the environment. Ensure the .env's locations such as .env. Okay. So the Gemini command loops enables for the .env. I'm a file verify and true. Okay. Let's see. We can at least try this.
ओके, आई डोंट नो कि क्या हुआ, लेकिन does the docker command manually. हमारे पास डॉकर का ही इशू आ रहा है। Error during connecting. Okay, so yes, there is an issue with docker. The header field in your setting is likely incorrect. Docker command running with stdio drums. Command should be passed by .env property which you have. Okay, okay, okay. हमारे पास डॉकर का ही इशू आ रहा है एंड guys will have to solve this, but हमारे पास ये इशू है। अब हम चैट जीपीटी के पास आते हैं, इसको हमने अपना मसला बता। This means the containers are trying to use VM container JSON config that WSL is trying to use is invalid. Here are some things to check. Try a more advanced cleanup to fix. What to try? Fixes for this error. Verify Windows features. Make sure virtual machine platforms and Windows servers available are enabled. They are actually. Use optional features.exe. Run type this. Check the features. Reboot. Prepare system files. Run PowerShell admin and run this. Okay. Corrupted files on system will be some converted original. Slash corruption. JSON delete. WSL configuration. Okay. Let me run this like so. Deployment image 7. Okay. Copy that. Oh, कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, let's see. जब तक ये होता है हम लोग जो है कहाँ थे, हम लोग इसी मसले को देख रहे थे। ओके, तो मतलब ये सारा सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हमने डॉकर फिक्स कर लिया तो ये भी फिक्स हो जाएगा एट द एंड। एंड ये अच्छी बात है कि हमें पता चल गया कि ये कोड और था, सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर अस। दिस इज अ विन विन सिचुएशन। ओके,
तब तक हम जेमिनी को खत्म कर लेते हैं। Okay. तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है? I have Gemini 2.5 Pro. To use Gemini 3, enable preview feature in settings and learn more at this. Okay. Slash settings. Okay. Let me just get out of here. Slash settings. Preview features. Okay. Models. Let's turn this to true. And yeah, that's it. अब हम टैब दबाते नीचे आते हैं। ओके, आई थिंक वी आर गुड। अब जो है हम अगर स्लैश मॉडल करें तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जेमिनी 3 भी आ रहा है। ठीक है, ओके, फॉर डीप रीजनिंग। ओके, आई विल सेलेक्ट दैट एंड करंटली हमारे पास जो है हम सेलेक्ट करें क्या, कौन सा मॉडल चला रहे हैं? प्रो। ओके, सो लेट्स tell it okay slash web user okay read folder web fetch shell run shell commands actually. Okay, this is quite a useful operation. I should have done that very earlier. Okay, let's just try that. Okay, हमारे पास अच्छा हो जाएगा। Okay, and find files globe. Let's give it some commands देंगे इसको तो अच्छा रहेगा। and there is a system repair pending which requires reboot and restart Windows and run SFC again. Okay, let's go to ChatGPT बाबा and इसको बता देंगे क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि there is a system repair pending which requires reboot to complete.
रीस्टार्ट विंडोज़ एंड रन एसएससी। ओके, तो हमें बस विंडोज़ रिस्टार्ट करनी है। सो फॉर दैट हमें स्ट्रीम बंद करनी पड़ेगी एंड मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। सो या विल जस्ट कम हियर अगेन।